एक इनकमिंग ग्रुप के आने से कायरलिटी इंट्रोड्यूस कर दी, एक कायरलिटी आपने एज अ ऑक्सिलरी प्लेस की हुई है, दो हो गए तो क्या हो गया आपका डायास्टीरियोमर्स. इफ डायास्टीरियोमर्स आर द प्रोडक्ट, सेपरेट देम and then remove your auxiliary, you get your final enantiomeric product. Now can you tell me it should be intramolecular or intermolecular? Intramolecular. Okay, the chirality is induced intramolecular क्योंकि आपने सबस्ट्रेट में पहले से ही ऑक्सिलरी प्लेस की हुई है. दैट ऑक्सिलरी इज नाउ कंट्रोलिंग द इनकमिंग ग्रुप. सो दैट इज योर इंट्रामॉलिक्यूलर, दैट इज विद इन द मॉलिक्यूल. द advantage is what? That in this case you are getting diastereomers which can be separable. Okay, but the what is the limitation? That the appropriate auxiliary with complementary functional group may not be available. अब आपने तो सबस्ट्रेट चूज किया था कार्बोनाइल ग्रुप, इसके साथ ऑक्सिलरी को रिएक्ट करने के लिए आपके पास कायरल अमीन अवेलेबल थी, तो आपकी ऑक्सिलरी अटैच होगी. सो दैट इज योर कॉम्प्लीमेंट्री ग्रुप. अब उस ऑक्सिलरी में बल्कि ग्रुप भी प्रेजेंट है जो एक फेज को ब्लॉक कर सकते हैं, बट दैट मे नॉट बी प्रेजेंट. सो दैट इज द लिमिटेशन ऑफ दिस जनरेशन इफ दिस सबस्ट्रेट controlled cannot be available. Okay, so can you explain me second last student? हाँ जी, आपसे ही बात कर रहा हूँ. कैन यू, नहीं आप बैठिए आगे आगे. हाँ, अरे आप इस साइड में. हाँ जी, आपसे ही बात कर रहा हूँ मैं. हाँ जी, आ जाइए. क्या नाम है आपका? Arun, can you explain me what is the limitation of this second generation? अब दो ही ऑप्शंस हैं, या आपको नहीं पता है या आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते. आगे आ जाओ, मुझे बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा. नहीं, इसमें हमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है? नहीं, वो बात तो इसकी लिमिटेशन की नहीं है ना, वो तो रिएक्शन की बात आ गई ना. आप ऑडियंस को क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं जो हमने लिखा है, वाई वी हैव टू गो टू थर्ड जनरेशन. सेकेंड जनरेशन की क्या लिमिटेशन है कि हमें थर्ड जनरेशन पे जाना पड़ेगा? वो तो इसकी एक फीचर हो गया, वो लिमिटेशन नहीं है. लिमिटेशन तो लास्ट स्टेप में है. अच्छा, मुझे ये रिएक्शन देख के बता सकते हैं कि इस स्कीम में हम कर क्या रहे हैं? बैठ के बताओ, बैठो. See, somehow after this program you have to appear for any professional degree. Okay, you have to go for any interview panels and there. वहाँ पे आपको एक्सप्रेसिव होना है. इट इज़ नॉट दैट यू आर नॉट एबल टू गेट द क्वेश्चन. दे कैन से ओके, दिस इज द स्क्रीन, दिस इज द रिएक्शन. आप इसको देख के क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं? सी, नाउ आई एम explaining again, just try to listen. In this case your substrate has no chiral unit, so you are deliberating putting a chiral unit in on it. Okay, for putting a chiral unit on it, that means your substrate and chiral auxiliary must react with each other, then you are going to place it.
So I am saying in your substrate you have a aldehyde group, carbonyl group, and the auxiliary which you are putting, you have a NH2. So they are complementary, you are going to get Schiff base. But if that complementary functional groups are not present, how your substrate is going to react with the auxiliary? So this is the first limitation. Okay. The next is, if you are attaching a carbonyl group with any auxiliary, that auxiliary must have some groups which will block one phase, because ultimately if you remember the NMR spectra of proton of ethanol, you said non-equivalence. What is non-equivalence? In center you have either above the plane or below the plane. So if you are not able to create the non-equivalence, then the possibility is 50-50%. So we have to create non-equivalence. Okay. So that's why the appropriate auxiliary with complementary functional group may not be available. So this is the limitation. So we have to move to third generation. So till now first generation is your substrate controlled, यानी substrate control करेगा आपकी asymmetric synthesis को. Second generation is your auxiliary control, जो auxiliary आप introduce करोगे substrate पे वो controlled करेगी asymmetric synthesis को. Now the third one is your reagent controlled. Okay. That's why I said it is not necessary that what you are seeing in this picture, H and methyl, they are going to same or other side. There are some other factors which are going to end, that we are going to discuss. I am just hinting one thing. For example, why I am taking the relevant examples which can be easily understandable to you. If someone is roaming around the seminar room to get his certificate attested by me, I don't know him or her in any respect, okay, but he or she is moving outside to get the certificate attested, I am refusing it because I don't have any connection with them, okay. So I can't trust whether I am doing right or wrong. So this is the one theory which we will follow. But that people or the girl and a boy who is moving around, they have some connection with you, whether your brother, sister, friend, known to. You came to me, sir, this is my friend, she or he is applying for this admission form, examination form, just attest it. So I will check his document and I will attest. Then how this theory changed? Because you came in between. I have a connection with you, I have a faith with you, I have a trust with you. Then you are emphasizing that candidate with respect to your, because if it is your brother and sister, then how can I say the document will be fake? Okay. So if that connection change my first aspect, so sometimes what happen? The question came, how we have to check whether it is coming from the up phase, whether it is coming from the lower phase. It is not directly what you see in the picture. It is the mechanism aspect. How that mechanism aspect? Sometime we are crowding the one plane, second plane is open, then you can say okay, we can go from above side because नीचे जो side है वो काफी bulky है. But if I place a group in a bulky side, that group is more attractive to the incoming group that will go from that side. Okay. Now if I instruct the candidate to come into room by this door, he or she is to come from this door. Maybe here 7-8 students are standing, okay,
maybe a table is here, 5-6 chairs are there, that door is open, so it is more comfortable for student to come from that side. Here is so much of blockage, but I am standing here, I tell Tanya come from this side, she will make a room, or I will make a room that she will enter from this side. But on a general terms, you see that is the open face, here is the blockage, we should come from that side. Okay, so there are a different mechanism aspect with respect to particular reaction. So here I am just emphasizing first, second, third, fourth generation, what is the main keyword, but exactly how this plane selection is going to occur, it depend upon the functionality which are attached, whether they are directly refusing it or whether they are also helping it to attach the incoming group. Okay, so that will come in the later part. Okay, so that is our third generation. Now third generation is your reagent control. Can you see in your substrate any chirality? आपके substrate में क्या कोई chirality है? No, only double bond and CH3 is present. Okay, so the achiral substrate is directly converted to chiral product by the use of chiral reagent. अब आप इसमें जो reagent ऐड कर रहे हो वो chiral in nature है. तो अब बताओ ये इंट्रामोलिक्यूलर होगा कि इंटरमोलिक्यूलर होगा? इंटरमोलिक्यूलर. द chirality is induced intermolecularly. Now how you compare this generation with respect to for second generation? In second generation you have to add first auxiliary, then after the work done is over you have to remove the auxiliary. So जो दो additional steps है वो आपके इसमें क्या हो गए? कट डाउन हो गए, because you are directly taking a reagent which is chiral in nature. Okay, now if you see in this reaction, what is this reaction? Have you done hydroboration around the carbon-carbon double bond? See, mostly in asymmetric synthesis we are doing the reaction across double bond, because carbon-carbon double bond or carbon-oxygen double bond both are in plane, both are sp2. So all the reaction which are occurring around these two functional group, they all can be used in the asymmetric synthesis. एल्कीन्स के कौन कौन से रिएक्शन पॉसिबल हो सकते हैं? आप सेंटर में जो बैठे आराम से यहीं बैठते हैं. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अक्रॉस हम कौन से रिएक्शन प्लान कर सकते हैं? ओके, आपने पढ़ा हुआ है मार्कोनिक रूल, एंटी मार्कोनिक रूल. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज अ पोलर बॉन्ड. You are always able to get partial positive, partial negative. So कहीं पर भी अगर आप partial positive and partial negative create कर सकते हो, you can do all type of addition reactions there. Okay, so in this case you can add the groups. So hydroboration में आप क्या करते हो? सिंपल आपने पढ़ा होगा ना, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन. तो आप BH3 लेते हो, दो कार्बन है आपके पास, एक साइड हाइड्रोजन अटैच कर देते हो, दूसरे साइड BH2 अटैच कर देते हो. नेक्स्ट स्टेप में आप उस BH2 की ऑक्सीडेशन कर देते हो तो आपका OH ग्रुप आ जाता है. सो दिस इज अ सिंपल रिएक्शन अराउंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. तो अगर इसी रिएक्शन का आपने एसिमेट्रिक वर्जन देखना है तो आपकी एल्कीन प्लेन में है, आप जो बोरोन रिएजेंट लेकर आ रहे हो वो कायरल ले आओ. क्यों? क्योंकि आपको बोरोन में BH3 से सबस्ट्रेट में क्या ऐड करना है? 1 हाइड्रोजन.
if you are taking 1 mole of substrate, in that case what you are going to add? 1 hydrogen and then BH2. तो जो BH2 है, जो ये 2 हाइड्रोजन है, इसकी जगह आपके पास कोई कायरल यूनिट लगी हो, so that is going to help in addition. Okay, so in this case ये कायरल बोरेन जो है, ये कायरल पूल में एक मॉलिक्यूल है अल्फा पाइनिन. ओके, ये बोथ एनेंटियोमर में अवेलेबल है, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी. तो इसको आप BH3 से रिएक्ट करिए, 1 हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया आपका, तो आपके पास क्या बन गया? कायरल रिएजेंट. सो यू आर गोइंग टू गेट अ वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट इन दिस केस. इसमें आपकी जो एडिशन हो रही है, कैन यू सी व्हाट इज द एडिशन? हाइड्रोजन एंड OH फ्रॉम द सेम फेस. अब आप प्रोडक्ट में देखिए, मिथाइल वाली साइड हाइड्रोजन है और नेक्स्ट कार्बन में क्या है आपका? OH. सो दे आर अटैकिंग ऑन द सेम फेस. अब आप कायरल रिएजेंट भूल जाइए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अक्रॉस सिंपल बोरेन रिएजेंट को ऐड कीजिए. यू हैव अ पॉसिबिलिटी ऑफ 50-50. क्लियर? सो इन दिस थर्ड जनरेशन you are choosing a reagent which is chiral in nature, that's why it is called a reagent controlled reaction. Okay, so I again repeat, first generation substrate controlled. You have to remember only keywords, वहीं से आप सारी method बता दोगे. First is substrate, second is auxiliary, third one is reagent. Now we move to the last generation, that is the catalyst controlled. Now for this generation 2021, the scientists got the Nobel Prize for discovering a new asymmetric organocatalysis. Now what is the reaction? The achiral substrate is directly converted into chiral product using achiral reagent but controlled by a chiral catalyst. अब ना तो आपके पास सबस्ट्रेट कायरल है, ना आपके पास ऑक्सिलरी है, ना ही आपके पास कोई रिएजेंट है जो कायरल है. तो अब आपके पास कायरल क्या है? कैटालिस्ट. अब जो कैटालिस्ट आप डाल रहे हो, उस कैटालिस्ट के ऊपर जो भी स्टीरियोकेमिस्ट्री अवेलेबल है, वो अब हेल्प करेगी आपको पर्टिकुलर इनेंशियोमेरिक प्रोडक्ट देने के लिए. Okay, so now in this case also chirality is induced intra or inter? Inter. So always you have to remember, when it is substrate, when it is auxiliary, the chirality is introduced intramolecular. When you are using reagent and catalyst, it is intermolecular, because you are reacting them with your substrate. Okay. Now unlike first, second and third generation, the chiral compound or chiral catalyst is required in catalytic amount only, not in a stoichiometry amount. ये जो chiral compounds होते हैं, आपने HPLC सुना हुआ है? GC, HPLC, chiral chromatography, इसमें बहुत कॉस्ट होती है. इसमें आपको chiral compounds बनाना, परचेज करना, तो कि काफ़ी अच्छा खासा फंड आपको इसमें यूटिलाइज करना पड़ता है. तो अगर आपने सबस्ट्रेट यूज करना है तो वो तो स्टाइकोमेट्री अमाउंट में यूज होगा. ओके, आपने ऑक्सिलरी यूज करनी है, ऐसा तो नहीं कर सकते कि अगर एल्डिहाइड 1 मोल ले लिया और जो अमीन है वो 0.5 मोल ले ली और आपने रिएक्ट कर दी और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा. दे शुड बी इनटू 1:1 रेशो, देन यू आर गोइंग टू गेट यूर कॉरस्पॉन्डिंग शिफ्ट बेस. सो यहाँ पे आपकी कॉस्ट बहुत यूज होगी, आपकी फंड बहुत यूज होंगे. बट इन दिस केस व्हाट रिक्वायर्ड? chiral catalyst, and catalyst does not consume in the reaction. It is only used for lowering the activation energy or enhance the speed of the reaction.
providing the space surface where your substrate and reagent can come bind in appropriate and proper orientation, and then the reaction can be proceed. Okay. So if you see the reaction, the catalyst they are using, that is syncodeine. Can you see in bracket what is the stoichiometry? 0.01 equivalent. Okay. Now in this catalyst, what is the reaction? In reaction, you are going to add a group around the कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. आप रिएक्शन देखिए, इस रिएक्शन में आपको क्या शो हो रहा है? अगर मैं कहूं सिंपल अल्कोहल को आपने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अक्रॉस ऐड करना है. ओके, अल्कोहल भी छोड़ दो, वाटर ले लो. If you have to add a water across the carbon carbon double bond, how you are going to add? One side hydrogen, other side OH. Now instead of OH I have a thiol or SH. Okay. So in this product, if I am talking like at this position one hydrogen and here SR group, they are going to add across the carbon carbon double bond. So how they are going to add? With respect to the chiral unit present in your catalyst. Catalyst has a chiral unit. One side it is hydrogen and one side is either OH. Other bulky group are guiding the incoming group. So you are getting your single enantiomeric product or enantiospecific product. Now what is the important part why this can get a Nobel Prize in fourth generation? Because you are reducing the cost of the reaction, plus whatever the chiral product you are making, that can be reused because it is a catalyst. It can be recovered or reused. Okay. So basis we will do in the next class. Now if I am now summarizing this, that you have to plan a asymmetric synthesis for any industry. You have to see what is the availability with you. If you have a substrate, then you can move with the first generation. If you have a substrate but that don't have any chiral unit and you have some complementary group available with you, then it is the second. Okay. But if you have any chiral reagent is present, then it is the third one. But if catalyst is present, it is the fourth one. So if now you have to label number one, now in whole scenario, if you have a keywords with you, you can explain full theoretical concept. What is full theoretical concept? What is your objective? Out of the two enantiomer, I want to get one in majority. In every case, what is your objective? Either two are available, four are available, you want to get one enantiomer in majority, that is your objective. So how this objective can be achieved? If generation 1 by substrate, generation 2 by auxiliary, generation 3 by reagent, generation 4 by catalyst. Okay. This is the only concept where now can you tell me if we go by any chemical reaction, what we required? Substrate, reagent, catalyst, then you are going to get your any product. तो substrate कभी भी आप 1 2 3 स्टार्ट करके देखिए, substrate 1 generation, auxiliary 2 generation, reagent 3rd generation, catalyst 4th generation. You are not going to miss any objective question if you are going to get this way. Clear? If you have any query regarding this, you can ask.
क्लियर हो गया सबको? ऐसा तो नहीं है कि सब ऊपर से चले गए, यानी 1 आवर के मेरे लेक्चर का कोई बेनिफिट नहीं होगा। आई डोंट वांट दैट यू रिमेंबर एनी स्कीम्स रिएक्शन, बट कहीं भी आप एज अ केमिस्ट, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से आप कहीं भी हो, आपसे कोई जर्नल कहे भी आप लोग क्या करते हो, यू विल से वी आर प्रिपेयरिंग मॉलिक्यूल्स, वी आर प्रिपेयरिंग डिफरेंट मटेरियल्स। सो वो उसमें कहीं भी आपके तो एक रिएक्शन में पॉसिबिलिटी हो जाती है इतने एनहेंसोमर की, तो क्या करोगे आप? मुझे तो सिलेक्टिव मॉलिक्यूल चाहिए, क्योंकि नीड आपको बताई है। अगर एक प्योरिटी में नहीं दोगे तो कोई उसको रेसमिक मिक्सचर को तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके, ठीक। We have a 5 minutes short break.